Good evening, everyone. This is Dr. Rohit Shankar Mani, microbiologist scientist from Unimek Healthcare, Bangalore. We know that whole world is facing one problem, that is the air pollution. What we say is environmental pollution. हमें पता है कि हमारे भारत में बहुत लोग मरते हैं हर साल। उसमें से अगर हम संख्या देखेंगे तो उसमें खास करके 30,000 लोग मरे हुए हैं लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ ओनली ट्रैफिक एंड एक्सीडेंट्स। 80,000 लोग मरे हैं बिकॉज ऑफ ओनली एयर पोल्यूशन। एंड ये डेटा WHO ने दिया है और जो हमारे भारतीय एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने दिया है। अकॉर्डिंग टू देम दिस डेटा इज referred here. Second thing, last year 2021, 80,000 people got died because of cancer and the asthma. So these numbers, what these numbers are saying to us, this is very important concern nowadays, because nowadays we are talking about the environment, their pollution, and the most important thing is the concern about the environment. Okay, so see, if we talk about the environment, then first thing which comes in our mind, that is the forest. ओके, सो अगर किसी को हमें पता है कि जो भी लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग बहुत बिजी रहते हैं 24 आवर्स 12 आवर्स इन देयर ओन जॉब्स, सो उनको वीक में एक बार या फिर महीने में एक बार दे गो आउट इन द फॉरेस्ट or they go out in the hill station just to take fresh air, clean air, what we can say, the clean air. So why this clean air is not getting in our cities, in our nearby our home, nearby our house, or nearby our village, or nearby city? This is very important concern nowadays. So the answer what we have, that is the pollution, right? So first we are going to discuss what is pollution, then why this pollution is happening, what are the different aspects required, or what are the different aspects for the pollution, and then we are going to shift on the air pollution, because air pollution is the most important ignored topic nowadays, we can say, because see, the world, like last year in the national conference, the government said that they are doing different activities to control the air pollution. But if we see the current scenario, the day by day air pollution is increasing. The example is Delhi, right? The Delhi, Mumbai, and the Bangalore, the big cities. We are getting the pollution count day by day, which is increasing, right? So for that purpose, we all have to think on this, and we have to go forward to control the air pollution, right? So what is pollution? So see, the pollution we have already studied in school days, like pollution क्या होता है, वो कैसे होता है, उसको कैसे कंट्रोल करना, and all that stuff. But that time we have studied for only study purpose, right? जैसे कि हमें पता है कि बहुत बार हमने इसका स्टडी किया है, बहुत बार हमने इसका पढ़ा है, लेकिन इसके ऊपर हमने कभी विचार नहीं किया, right? We have to think on what is air pollution and why we have to control it. We have to think on air pollution. So thinking is most important, which is the first step of awareness. So we have to spread awareness about the air pollution and the control of air pollution. So pollution is nothing but what we know, that the environment is very free, the environment is very clean, but when unwanted substances comes in the environment, then environment get polluted. एनवायरनमेंट बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन एनवायरनमेंट में कोई तो ऐसा अनवांटेड या फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है, उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। लेकिन ये पोल्यूशन होता क्यों है, ये सब्सटेंसेस आते कहाँ से है, फॉरेन सब्सटेंसेस व्हाट वी कैन से। So these foreign substances, these unwanted substances are nothing but the air pollutants, or we can say that pollutants. ये पोल्यूटेंट्स फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, हानिकारक होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और इसीलिए जब ये एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, तो इसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन बोलते हैं। और जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको फॉरेन सब्सटेंसेस, फॉरेन पार्टिकल्स कहा जाता है।
और ये जो पोल्यूटेंट्स है, ये जो पार्टिकल्स है, खास करके इंडस्ट्रियल एरिया या फिर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड दी ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, और इसका इफेक्ट डायरेक्टली पोल्यूशन, डायरेक्टली इन्वायरमेंट पे होता है, और उसका असर एज लाइक द रिजल्ट व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज द पोल्यूशन. So this is the simple scenario of pollution, pollutant and the different sources of the pollutants. Now we are going to shift towards the air pollution. Okay. Now first concern that is about air pollution is, see air pollution क्या है, इसके बारे में हमें बात क्यों करनी है? Because nowadays जैसे कि मैंने बोला कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेटा दिया था लास्ट ईयर, उसमें बताया था उन्होंने कि अराउंड 70 to 80,000 डेथ्स ऑकर्ड ड्यू टू द ओनली एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन के कैसे लोग मर रहे हैं? बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन द पीपल आर गेटिंग अस्थमा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इग्नोर्ड डिसीज नाउअडेज, एंड इसकी वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं. अस्थमा. सेकेंड दैट इज द कैंसर. You know कि in 90s there was no any treatment or cure on the cancer. हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जो कैंसर की वजह से मर गए. Okay, but nowadays we are having everything in our hand. We are having treatment. We are having different types of tablets. But we are getting cancer and we are not getting cured. Okay, so उसके लिए बहुत ही important आजकल हम मानते हैं सोर्स है कैंसर के लिए, दैट इज़ द एयर पोल्यूशन. नाउ व्हाई एयर पोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कैंसर और दिस अस्थमा एंड ऑल टाइप ऑफ डिसीजेस. बिकॉज सी एयर कंटेंट सॉलिड पार्टिकल्स एंड द गैसेस. सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेस जब एकत्र आते हैं तभी हमारा एयर बनता है, और दैट इज़ वॉट एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, हमें डेली लाइफ में हमें एयर की ज़रूरत होती है, बिकॉज वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, वी हैव टू लिव राइट. सो उसके लिए हमें ऑक्सीजन लगता है, तो ऑक्सीजन हमें एयर से मिलता है. लेकिन ये जब एयर पोल्यूटेड हो जाए, ये जब एयर हानिकारक बन जाए, तो उसके वहाँ से हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, राइट. So for that purpose what we have to do? We have to maintain our environment very clean, that is we have to maintain clean air. राइट. सो सी एयर पोल्यूशन होने के लिए बहुत सारे पोल्यूटेंट्स का निर्माण होता है. जैसे कि हम बात करें तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ये दो पोल्यूटेंट्स के टाइप्स होते हैं और एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं. प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स मतलब क्या एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स मतलब क्या? तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स मतलब द एयर पोल्यूटेंट्स दोज आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेस, like the factories, the fossil fuels or the emulsions, like जो प्राइमरी सोर्स होता है वहाँ से जो पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं उनको प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बोला जाता है. एंड ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स खास करके पोल्यूशन के लिए हानिकारक या फिर इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, और इनकी वजह से पोल्यूशन होता है. That is what the research what is going on in the world nowadays in the air pollution, they are totally concentrated on the प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स. ओके, ये जब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जब हवा में आते हैं तो हवा को ये पोल्यूटेड कर देते हैं और एयर पोल्यूशन हो जाता है. लेकिन ये प्राइमरी पोल्यूटेंट जब एक साथ जब रिएक्ट होते हैं, तो इनका रिजल्ट होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर जनरेटेड फ्रॉम द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, एंड दिस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एयर पोल्यूशन. तो इसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है. अभी मैं बोल रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है या फिर कंसर्न है, इट इंडिकेट्स दैट दिस एयर पोल्यूशन इज मोस्टली ट्रिगर्ड बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, एंड दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर दोज pollutants which are very important and very what we can say that crucial for the air pollution. So अगर हमको एयर पोल्यूशन कंट्रोल में करना है तो what we have to control? We have to control primary and secondary air pollutants. Okay, तो अगर हम ये तो हो गई एयर पोल्यूशन के बारे में बात, अगर ये पोल्यूटेंट्स के बारे में बात हो गई. इफ़ यू आर सेइंग हाउ द एयर पोल्यूशन इज ऑकरिंग, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन? So first point that comes, that is a burning of fossil fuels.
नाउ सी, फॉसिल फ्यूल्स बर्न होने की वजह से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हवा में आ जाते हैं, एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जब हवा में आते हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं, तो जो हवा है वो पोल्यूट हो जाती है। दैट इज व्हाट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल is very important concern for the air pollution. Second, that is automobiles. Now, automobiles like jeep, trucks, cars, buses, etc. इनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, और दैट इज व्हाट इट लीड्स टू द एयर पोल्यूशन. Third, that is agriculture activities. Now we know that India is agriculture country, right? So here, whatever the agriculture activities are going on, that activities are also helpful for these causes of air pollution. Next, factories and industries, because we know that factories and nowadays civilization is happening, industrialization is happening. So because of that, what is happening? The industries are growing day by day. So industries and factories are also responsible for the air pollution. Mining activities and the domestic sources. See, air pollution होने के लिए pollutants की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है. और ये पोल्यूटेंट्स आते कहाँ से हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड द डोमेस्टिक सोर्सेज. ये इतने सोर्सेस हैं जहाँ से पोल्यूटेंट्स आते हैं और एयर पोल्यूशन हो जाता है. अभी इसका इफेक्ट क्या होता है? देखो, हमने देखा कि पोल्यूशन क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है. हमने देखा कि पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, एयर पोल्यूशन क्या है, कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन देखा. अब ये सब होने के बाद इसका इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज द डिसीज, और वी कैन से डिसीजेस, रोग जिसको हम बोलते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर, अस्थमा, different respiratory diseases, heart diseases. These are the important diseases which are happening in the society due to the air pollution. और इन डिसीज़ की अगर तीव्रता देखी जाए, इन डिसीज़ का नंबर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है. इट्स नॉट लाइक दैट वी आर नंबरिंग, राइट. हम उसको नंबर नहीं काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 लाइक दैट. इट इज़ सो ह्यूज. दैट इज ऑट द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज बिग इन द सोसाइटी. सेकेंड, ग्लोबल वार्मिंग. जैसे कि हमें पता है कि बीच में अमेजॉन फॉरेस्ट था, वो पूरा जल गया था, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो एयर पोल्यूशन हैपेंड. So that was natural activity. So that leads to the global warming, right? So if air pollution is happening, that is leading to the global warming. The important example is the greenhouse gases. Then third is the acid rain. Acid rain, we know that because of the burning of fossil fuels, acid rain, this is the most important effect of air pollution. Then ozone layer depletion. Now we all are aware about the ozone layer. The ozone layer is important for our earth. It hides or it prevents the unwanted rays from the sun, right. But because of air pollution, this ozone layer is depleting day by day. So this ozone layer depletion is one of the effect of air pollution. Then effects of animals. Now see, whatever the air pollutants are there, these all air pollutants are suspended in the air and water. Okay, ultimately they are affecting on the animals and the humans. So these are the some effects of air pollution. That the first effect of air pollution is the disease, then global warming, then acid rain, ozone layer depletion, and the effect on animals. Now, how we can control the air pollution? See, the control is a must, right? So how we can control the air pollution? The first important factor that I would like to tell you, that see, हमारे सबके पास गाड़ियाँ है, राइट. हम सब गाड़ी से आते हैं, कार से आते हैं. ओके, सो फर्स्ट important thing is that we have to avoid using daily vehicles. See, vehicles are required nowadays, right? If you want to go from one place to another place, that time we are using always vehicles. So we can reduce the use of vehicles. Second thing, energy conservation. See, fossil fuels are burned to generate electricity. Therefore, do not forget to switch off the electrical appliances when not in use. जब हम electricity का use नहीं करते, फैन का यूज़ नहीं करते, दैट टाइम वी कैन जस्ट उसको बंद करके चले जा सकते हैं. तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग भी बच जाएगा.
So that is what we have to conserve our energy. Next is the use of energy efficient appliances. Like, see, whether at the domestic level or at the industrial level, we must push for appliances that use energy efficiently, which result in complete combustion of fuel. As incomplete combustion causes air pollution. So use of energy efficient appliances is so very important pollution control factor. Then shifting industries using modern techniques, shifting to natural gases. So these are the some air pollution control techniques or methods what we can do in our daily life. So first is just reduce the using of vehicles, and then energy conservation, use of energy efficient appliances, shifting industries, using modern techniques, and shifting to natural gases. So these are the some air pollution control techniques or methods I would like to tell you. Okay, so this is all about the environmental pollution, air pollution, their causes and the different effects, and the air pollution control. Okay, so if you are having questions, we are going to answer all questions. Okay, we'll post the all answers on our Facebook. So thanks a lot for this live session you joined, and इस live session का एक फ़ायदा हो जाए अच्छा सोसाइटी के लिए कि अब तक सिर्फ हमने ये किताबों में पढ़ा था, लेकिन इसके ऊपर हम विचार करना स्टार्ट करें. दिस इज़ व्हाट द मोटिव इज़ फॉर दिस लाइव सेशन. सो थैंक्स लॉट.